हेलो बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था, अब मैं इससे रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज है 3.3 NCERT की 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, मैं एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। इसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट करूंगा। फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन इज, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, कॉस अल्फा, साइन अल्फा, ये इसके एलिमेंट्स हैं, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज इनटू ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स इक्वल करनी है, तो आपको सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। मैं ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। ए ट्रांसपोज में आपको पता है, ट्रांसपोज जब आप करते हैं तो कॉलम विल बी कन्वर्टेड इनटू रोज एंड रोज विल बी इंटरचेंज्ड इनटू कॉलम्स। तो आप जो मर्जी, जैसे या इस रो को आप कॉलम बना दीजिए या इस कॉलम को रो बना दीजिए। फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ, तो यू विल गेट कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड सिमिलरली सेकंड कॉलम विल बिकम द सेकंड रो, देन साइन अल्फा into cos alpha. Now I am going to multiply this because I have to find A transpose into A transpose into A. इसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए अब देखिए, I am writing cos alpha minus sin alpha to sin alpha cos alpha, and A matrix is cos alpha sin alpha minus sin alpha and cos alpha. You can see these both matrices are of the same order, 2 by 2 means they are square matrices. Therefore the product of their product will also have the same order. तो I am going to multiply this. मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इसके, तो इट विल गिव यू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा. This will be the first element. Now this row with the second column, sin into cos alpha and cos alpha into minus का साइन आ जाएगा, sin into cos alpha, like this. अब इसी तरह से सेकंड रो को कॉलम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos alpha into sin alpha एंड माइनस साइन अल्फा से आप cos अल्फा को, तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, एंड सिमिलरली नाउ सेकंड रो विद द सेकंड कॉलम sin स्क्वायर अल्फा एंड cos स्क्वायर अल्फा, यू विल गेट sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा. Now you know the trigonometric identity. What is the identity? You have the identity that sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. Using this identity here and here, you will get 1. This will be cancel out, 0 0 and 1. Now this is an identity matrix of the order 2 by 2, therefore this is an identity matrix, hence the result is verified. Verify हो गया है. The second question is also similar. Now I am going to solve one question of question 10, in which you have to express these matrices
in the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. तो kindly look here, इस टाइप का क्वेश्चन मोस्टली आता है बोर्ड में. तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें मैं एक पार्ट करूँगा, 3x3 की मैट्रिक्स लेके करता हूँ. तो आई एम गोइंग टू solve the third part of question 10. So see here, what is the question? The question is, here is a matrix, let it be A is given 3 3 -1 उसके elements हैं, and -2 1 -4 -5 and 2, these are the elements. Now when we have to write this matrix as a sum of skew symmetric and symmetric matrix, then you know that we have to find A plus A transpose. Because this is a symmetric, you have to prove that this is a symmetric matrix. Therefore, let it be a matrix B. First of all, I have to show that this is a symmetric matrix. Then I will tell you that other matrix I am forming is a skew symmetric matrix. So here is the matrix. So first of all, I am writing the elements of this A, and the transpose of this matrix will be, rows are interchanged into columns. So therefore you will get the matrix this. Now we have to add this. I am going to add these matrices. Then you will get the elements 3 plus 3 6, 3 minus 2 1, -1 plus -4 -5, -2 plus 3 is 1, -2 -4, 1 -5 -4, -4 -1 -5, -5 1 -4, and 2 plus 2 is 4. Okay, now this is the matrix B. If you have to show that this matrix is a symmetric matrix, then you have to prove that the transpose of B is equal to B. So I'm finding the transpose. Here the transpose is 6 1 -5, 1 -4 -4, and -5 -4 4. You can see that the transpose of the matrix B and B is equal to B, means B equal to B transpose. Therefore B equal to A plus A transpose is a symmetric matrix. Now the half of this matrix is also a symmetric matrix. Therefore half of B is also a symmetric matrix, means half of A plus A dash is a symmetric matrix. Now similarly, you can show that A minus A transpose. I am going to solve A minus A transpose. Let a matrix C A minus A transpose is a skew symmetric matrix. तो ये आपने थ्योरम भी पढ़ी है कि the sum of A and its transpose is a symmetric, and their difference is a skew symmetric matrix. तो हम इसको showing, I am writing only that this is a skew symmetric matrix. This is negative of C complement. C transpose means C is equal to minus of C transpose. Therefore C is a skew symmetric matrix. ये skew symmetric है. तो C जो था वो आपका A माइनस A डैश ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है. तो हाफ भी उसका क्या होगा
it is also a skew symmetric matrix. Okay, now you can see that the matrix A, it can be written like this: half of A plus transpose of A plus half of A minus transpose of A. You can see the actual calculation will give you A from here. The actual calculation, because half of A plus half of A transpose plus half of A plus half minus half of A transpose. A transpose will be cancelled out, and you will get half of A plus half of A means equal to A. This is symmetric, this is skew symmetric matrix. Therefore, a matrix, it can be written in the form of a symmetric matrix and skew symmetric मैट्रिक्स. तो यही आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आपका मोस्टली आता है एग्ज़ाम में. तो फिलहाल यही है. और 11th और 12th क्वेश्चन आपके